Good afternoon, dear students. Today we are going to study about the flower. So flower is the reproductive unit in plants, means that helps in sexual reproduction. Clear? That is a reproductive unit, and especially in the angiosperms. What are angiosperms? The flowering plants are called angiosperms. In your earlier classes, you have studied the structure of a typical angiospermic flower. क्लियर? जो स्ट्रक्चर था हमने स्टडी किया है फ्लावर का, तो हमने उसमें 4 डिफरेंट पार्ट्स स्टडी किए हैं. फर्स्ट वन सेपल्स, सेकंड पेटल्स, थर्ड stamens, and fourth pistil, or another name for pistil is carpel. So in our earlier classes we have studied these 4 parts, and we have categorized them into 2 categories. Like these are the accessory or spotty parts of flower, and these are the reproductive part. Clear? So stamen and pistils are the reproductive part in a flower, and we also call them as essential parts of a flower, and these are also known as, जो sportive है और जो accessory parts हैं, these are also called as the non-essential parts of a flower. यहाँ पे जो नॉन एसेंशियल लिखा है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि इनका कोई फंक्शन नहीं है, दे आर नॉट एसेंशियल, बट जो मेन रहेगा इनका, जो ये है, ये एसेंशियल क्यों है? बिकॉज दीज हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दीज आर स्पोर्टिव. क्लियर? तो ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं? स्टेमन और पिस्टल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. क्लियर? सो दीज आर द वेरियस पार्ट्स. और अब इन 4 पार्ट्स को हमने 4 वर्ड्स में डिवाइड किया है. क्लियर? तो इसको कैसे डिवाइड करना है हायर क्लासेस में, जो हम टेक्निकल टर्म्स स्टडी करेंगे इसके लिए, तो इसको हमने 4 मेन वर्ड्स में डिवाइड करना है. क्लियर? So what are the 4 words? So first one, जैसे कि यहाँ पे sepals लिखा है, तो जितने total number of sepals होंगे in a flower, we call that calyx. Clear? Related with sepals. Then second is corolla, petals. जो total number of petals है in a flower, the term provided for them is corolla. Then after that, for stamens, androecium. The total number of stamens in a flower, that condition or that term is called as androecium. And after that, pistil or carpel, the term is gynoecium. That is for the total number of pistils or carpels in a flower. क्लियर? तो ये क्लियर हो गया है, सेपल, पेटल, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स. तो उसी के बेसिस पे हमने फ्लावर को डिवाइड किया, तो 4 डिफरेंट वर्ल्स में अरेंज्ड है उसमें. तो फर्स्ट जो वर्ल है, दैट इज़ ऑफ सेपल्स कॉल्ड कैलिक्स, second of petals called corolla, and third of stamens called androecium, and fourth of pistil or carpels, that is called gynoecium. Clear? अब कुछ फ्लावर्स होते हैं जिसमें सेपल्स और पेटल्स को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. क्लियर? दे आर नॉट डिस्टिंक्ट. जैसे ये दोनों क्लियर नहीं होंगे क्या कौन सा पेटल है कौन सा सेपल्स हैं. क्लियर? तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड पेरियंथ. क्लियर? तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप? सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉट डिस्टिंक्ट. दैट कंडीशन इज कॉल्ड पेरियंथ. That condition is called पेरियंथ.
अब जो पेरियंथ में ना हम उसको सेपल्स बोल सकते हैं ना हम उसको टैपल्स बोल सकते हैं, तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ करेंगे हम? टैपल्स. न्यू टर्म फॉर यू, दैट टर्म इज टैपल्स. मीन्स combination of sepals and petals, that is tepals. Clear? So next is according to androecium and gynoecium, little classification of flowers. So according to reproductive organs. Clear? Here I will write androecium and gynoecium. Androecium and gynoecium, that constitutes of stamens, total number of stamens. Here total number of pistils or carpels. So these are the male reproductive part of a flower. These are the male reproductive part of a flower, and that is the female reproductive part of a flower. Clear? अब जो फ्लावर होगा जिसमें ये दोनों पार्ट्स होंगे, एंड्रोशियम एज वेल एज गाइनोशियम, दैट काइंड ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर. तो यहाँ पे क्या लिखो आप? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम हैविंग दीज बोथ. तो उस फ्लावर को क्या बोलेंगे हम? दैट फ्लावर इज कॉल्ड bisexual flower. Clear? Another term for that bisexual flower is perfect flower, and another is hermaphrodite. Hermaphrodite. क्लियर? ये जो टर्म है हर्मेफ्रोडाइट, ये हम एनिमल्स के केस में भी यूज़ करते हैं जिसमें बोथ सेक्सेस होते हैं, मेल और फीमेल. तो उसके लिए भी हर्मेफ्रो, जैसे अर्थवर्म है तो उसमें मेल और फीमेल पार्ट सिंगल एक अर्थवर्म में रहेंगे, तो उस केस में, एनिमल्स के केस में भी हम क्या करते हैं? हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल टर्म यूज़ करते हैं वहाँ पे. क्लियर? जिसमें ये दोनों प्रेजेंट है. एंड सेकंड आता है आपका जिसमें इसमें से एक होगा. ठीक है? जैसे एंड्रोशियम होगा, आइदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम, या तो एंड्रोशियम रहेगा उसमें या उसमें गाइनोशियम रहेगा. तो उस तरह के फ्लावर्स को क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैविंग ओनली वन. या तो उसमें एंड्रोशियम है या तो उसमें गाइनोशियम है. तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम? फ्लावर हैविंग ओनली वन एसेंशियल ऑर्गन. क्लियर? या तो उसमें एंड्रोशियम है या उसमें गाइनोशियम है. तो उस तरह के फ्लावर को क्या बोलेंगे हम? यूनिसेक्सुअल फ्लावर. और अनदर टर्म क्या है इसके लिए? जैसे यहाँ पे ये परफेक्ट फ्लावर है तो इसके लिए इम्परफेक्ट फ्लावर भी इसको बोलते हैं. सो यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू दीज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम टाइप्स ऑफ फ्लावर लिखे. क्लियर? हैविंग बोथ द सेक्सेस, हैविंग वन ऑफ द टू. क्लियर? तो उसमें जैसे हम उसमें टू टाइप्स में इसको लिख सकते हैं. जो इम्परफेक्ट फ्लावर है, फिर जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर दैट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, पिस्टिलेट और स्टेमिनेट. क्लियर? जैसा कि टर्म है flower having only pistil, flower having
only pistil or फीमेल पार्ट. क्लियर. और यहाँ पे फ्लावर हैविंग ओनली स्टेमन्स. क्लियर. और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज स्टेमिनेट फ्लावर एंड पिस्टिलेट फ्लावर. सो यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करती हूँ डायग्राम ऑफ अ फ्लावर. क्लियर. सो here are the two essential parts. क्लियर. तो इसमें दोनों है, लाइक दिस इज द एंथर फिलामेंट. ये क्या बना रहा है? स्टेमन. और ये क्या है यहाँ पे? ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. दैट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इज कॉल्ड एज पिस्टिल. तो जो मैंने ये फ्लावर ड्रॉ किया है, यहाँ पे सेपल्स एंड पेटल्स हैं. सेपल्स, दीज आर पेटल्स, दैट इज द थैलेमस एंड हियर इट इज़ द पेडिसल. सो जो ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर हैविंग बोथ द सेक्सेस, stamens as well as pistil. Clear. So this is diagram of a bisexual flower. नेक्स्ट मैं ड्रॉ करती हूँ उसमें. क्लियर है? ये आपने 10th क्लास में स्टडी किया हुआ है अबाउट द फ्लावर. सो नेक्स्ट आई विल ड्रॉ ओनली द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स that we categorize them into two categories. So first I will draw pistillate flower. Having only pistil. So that is ovary, style, stigma, and that is the pistil, the female part of a flower. These are the accessory parts: sepals, petals, pedicel and thalamus. Clear. So that is a unisexual flower. और unisexual flower में भी कौन सा है? unisexual flower. और इसमें भी कौन सा है? pistillate flower. pistillate flower. नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं उसमें staminate flower. Clear. That is having only stamens. So these are the anthers, filament. Clear. और ये क्या बना? stamen. And the type of flower is staminate flower, and that is a type of flower which we call as unisexual flower. So यहाँ पे जो मेन हमारा फोकस रहेगा, दैट विल बी ऑन द टाइप्स ऑफ फ्लावर, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. क्लियर.